Hello and welcome to our special show, Road to New Government. I'm Gargi Rawat. I'm Maria Shakil, and there is a major churn which is happening in Maharashtra politics after the Lok Sabha results. So on the show tonight, we'll be talking about whether the Mahayuti partners are on the back foot. And will Mahayuti survive the poll aftershocks? So let's take you through all the developments that have taken place, since the Lok Sabha results after the dismal performance by the Mahayuti. Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis, he held that dramatic press conference where he offered to resign from his position. He said he wants to work for the BJP. This is after the BJP was reduced from 23 to 9 seats in Maharashtra. He is now in Delhi and is expected to meet with Amit Shah and JP Nadda. And in fact, Ajit Pawar's NCP Gargi managed only one seat. He did not go for, in fact, travel to Delhi for the NDA leaders meeting, which took place at 7 LKM yesterday. And he sent his representative in the form of Praful Patel. There are also reports that several of his MLAs are in touch with Uncle Sharad Pawar's NCP. Now, there was also speculation that Uddhav Thackeray was in touch with the BJP. That was something that was being reported, but very strongly denied by the MVA. There was a press conference held by Jayant Patil from Sharad Pawar's NCP, who quashed all these rumors. In fact, said he met him for a coffee yesterday. There's no such thing. Interestingly, Jayant Patil also admitted that Ajit Pawar MLAs were in touch with them. And meanwhile, the BJP is also claiming that several MLAs of Maha Vikas Aghadi are also in their sampark. So as this, how do you describe it? Like the chessboard on which there are several players. And a churn, yes. Yes, a churn. And as they make their moves, yes. As they make their moves, we are going straight to someone who perhaps can give us a glimpse into what really is happening in Maharashtra. Congress Party President Nana Patole is joining us. Nana Patole ji, हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. इतने बड़े रिजल्ट के बाद उसके लिए सबसे पहले आपको बधाई. कितने लोग आपके संपर्क में हैं? ये भी कहा जा रहा है कि शिंदे सेना के एमएलएज आपके संपर्क में हैं और अजीत पवार एनसीपी कैंप के भी लोग शरद पवार के टच में हैं. क्या हो रहा है वहां? देखो, महाराष्ट्र में परिवर्तन की लहर शुरू हो चुकी है. महाराष्ट्र ये शौफुल्ला अम्बेडकर विचारधारा का और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है. और ये महायुति में जिस तरह से ये विचारधारा को ही ख़त्म करने का एक प्लान बीजेपी ने जो बनाया था और लोगों ने उसका जवाब इस पार्लियामेंट के चुनाव में दे दिया. और कांग्रेस ये सबसे बड़ी पार्टी कर आज महाराष्ट्र में सामने आई है. तो मुझे ये जो जिन नेताओं के बारे में बात आप लोग कर रहे हो, फिर एकनाथ शिंदे के पार्टी के लोग हो या इवन बीजेपी के भी कुछ नेता लोग हमारे संपर्क में आए हैं और अपने अजीत पवार के भी गुट के कई नेता हमारे संपर्क में हैं. और समय के साथ कई निर्णय होंगे और अभी चुनाव असेंबली का हमारा 5-6 महीने पे है, तो उसमें अभी तैयारियां भी हमारी शुरू हो गई है और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार लाने का हमारा पूरी कोशिश रहेगी. जी, लेकिन ये जो संपर्क हो रहा है उसे आगे भी बात बढ़ेगी क्या? क्योंकि आपने कहा कि आपके संपर्क में हैं एमएलएज, बट बीजेपी भी कह रही है कि एमवीए के नेता उनके संपर्क में हैं. देखो, महाविकास आघाड़ी के कितने लोग संपर्क में मुझे पता नहीं है, क्योंकि जो लोग गए उनकी क्या स्थिति बनी है और कैसे अग्निवीर बने हैं. तो उसमें एक हमारा नांदेड़ का नेता का भी एक बड़ा उदाहरण आपके सबके सामने है. मैं नाम नहीं लेते हो, आप समझते हो. तो मुझे लगता है कि उनके कितने लोग संपर्क में हैं कि नहीं, ये मुझे पता नहीं. लेकिन हम भी जो निर्णय लेंगे मेरिट के आधार पर लेंगे. कोई कचरा लेने का काम हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे कार्यकर्ताओं में से ही नेता हम बनाएंगे. ये मानस हमारा है. तो जनता का कॉल जो है वो अब कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साइड में है और उस आधार पे हम लोग निर्णय महाराष्ट्र में लेंगे. नाना पटोले जी, 6 महीने में महाराष्ट्र में असेंबली चुनाव होने वाले हैं. पार्टी का क्या असेसमेंट है कि जो लोकसभा के परिणाम आए हैं उस चुनाव पर कैसा असर पड़ेगा? मैं आपको अभी से बता रहा हूँ बहन कि इससे अच्छा रिजल्ट महाराष्ट्र में आएगा और बीजेपी जो बची बुची है वो भी महाराष्ट्र की जनता उनको निपटा कर महाविकास आघाड़ी के हाथ में सत्ता देगी.
जी, अब बीजेपी की बात करते हैं। ये निर्णय एकनाथ शिंदे ने भी लेना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो महायुति की असंवैधानिक जो सरकार है उसको लोगों ने नकारा है। जैसे फडणवीस ने कहा है वैसे एकनाथ शिंदे ने भी कहना चाहिए और सरकार बर्खास्त करके जनता के सामने वो लोग आना चाहिए। ये मांग कांग्रेस करती है। जी, तो सवाल से पहले ही आपने शायद जवाब दे दिया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के कॉन्टेक्स्ट में हम पूछना चाह रहे थे। लेकिन नाना पटोले जी, 6 महीने के बाद नहीं, आपको लगता है पहले ही होना चाहिए ये पूरा चुनाव? बिल्कुल है, क्योंकि जनता ने इनको नकारा है महाराष्ट्र में, और नकारने के बाद इनके पास तो कितने सीटें थी, 26 इनकी खुद की बीजेपी की थी, वो 9 पे आके लटक गए। और इनके पास 19 सीटें थी एकनाथ शिंदे के पास, वो भी आके लटक गए। तो दोनों का अगर हिसाब लगाए तो जनता ने इनको नकारा है। जैसे फडणवीस ने डिसीजन लिया है वही डिसीजन एकनाथ शिंदे ने लेना चाहिए। महाविकास आघाड़ी की बात कर रहे हैं गार्गी, यही जो सवाल है। जी, जो खींचतान पहले हो रही थी महाविकास आघाड़ी जो अलायंस में, क्या अब हम मान सकते कि सब ठीक है? नहीं, महाविकास अघाड़ी में कोई खिस्तान नहीं है। हम लोगों का पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी हमने कहा था कि जो भी सीटें का बंटवारा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ जो होती है सीटों के बंटवारे में होती है, उस समय भी हमने प्रस्ताव रखा था कि मेरिट के आधार पर डिसीजन हो। अगर मेरिट के आधार पर डिसीजन होते तो आज सबकी सीटें यहाँ पे बढ़ती थी और महायुति को बहुत बड़े जो महाराष्ट्र में जनता का जो गुस्सा है उसके सामने जाना पड़ता था। जो सीटें अभी महायुति को आई है वो भी सीटें आज महाराष्ट्र में नहीं आती। हमारा यही कहना असेंबली में भी रहेगा कि मेरिट के आधार पर डिसीजन लीजिएगा, और मेरिट के आधार पर डिसीजन लेंगे तो आराम से हम लोग महायुति की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, इसको हम परास्त करेंगे। नाना पटोले जी, कांग्रेस अब छोटी पार्टी बन गई है। आपने ज्यादा सीट्स अपने अलायंस पार्टनर्स को शायद खुश करने के लिए दिया था, तो क्या आपको लगता है इस रिजल्ट के बाद, जहां पर साफ तौर पे दिख रहा है महाविकास आघाड़ी को बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है, क्या वो जो निर्णय था पार्टी का कि कम सीटों पे लड़ने का, क्या वो सही था? देखो, हमारा रोल तो यह है कि वोट का विभाजन ना होना और बीजेपी को देश से, सत्ता से निकालना, ये हमारा मकसद पहले भी था, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो परिस्थितियां है, तो आज हम अगर सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में है तो हमारा जो सहयोगी दल है उनको संभाल के लेके जाना और वोटों का विभाजन न होने देना, यह हमारा पूरा ध्यान रहेगा उस सब चीज़ के ऊपर, और उसी आधार पर हम महाविकास आघाड़ी को लेके चलेंगे। जी, और आखिरी क्वेश्चन कि 6 महीने में जो चुनाव होने वाला है, क्या उसका चेहरा उद्धव ठाकरे होंगे? देखो, चेहरा तो अलायंस में कोई होता नहीं। इंडिया आघाड़ी भी हो गया, इंडिया अलायंस भी हो गया, तो चेहरा ऐसा थोड़ी बनाया गया था। जो भी जिसकी ज़्यादा सीटें आती है उसी आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो चलते रहता है। तो वो अलायंस में ये सब चीज़ें पहले नहीं होती, आफ्टर चुनाव के बाद होती है। चलिए नाना पटोले जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और गार्गी, he gave us 2 news points in that conversation with us. First, that in the upcoming assembly elections, which will happen in 6 months' time, Uddhav Thackeray is not really the face going into elections. It will be a post poll, perhaps. It will be decided depending on the numbers. And he also said, interestingly, that he is of the opinion that the elections in Maharashtra should be advanced. Well, the MVA would certainly want that, given the kind of results they had in the Lok Sabha elections. So let's bring in our guest now. Mahesh Tapase is Chief Spokesperson of the NCP of Sharad Pawar faction, China NC of the BJP, Sanjay Gupta, leader of Shiv Sena UBT, and we also have Susi Ben Shah of Shiv Sena Shinde faction. Susi Ben Shah, even as we begin this conversation, there is an important piece of news that is coming in from Eknath Shinde camp, that he has said that his son,
Shrikant Shinde, who is a 3-term MP from Kalyan, will not be considered for any kind of role in the union cabinet. Many would say that that's setting a right example because most fathers tend to push their sons and daughters whenever they are in politics. Good evening to all. I think now you've cracked the right sentences. It's the crack in Mahagadi was because of the sons and daughters of the respective families. It was never because of the Mahayuti. So let us understand this. Now, saying that, I must congratulate the NDA and especially our Prime Minister Shri Narendra Modi ji for cracking a hat trick today. We look forward to a developed, safe, secure, and as a one nation, which is India, we look forward and welcome Shri Narendra Modi's leadership. Now, having said that about our Chief Minister Eknath Raoji Shinde, he sets an example. He is the tallest Maratha leader, the most popular leader of Maharashtra. His son is a 3-time MP, Shrikantji, and he has won with a thumping majority. But still, he will not represent our Shiv Sena in the new NDA government. So let's see what happens. Now, talking about Maharashtra, you see, we were given to believe that Shiv Sena has just won 7 seats. That's not the. Let us understand, madam, that when we analyzed the entire booth data, we understood and realized that the total vote Are you share of concerned overall that some of your party leaders may be in touch with Uddhav Thackeray's Shiv Sena? It is the other way around. Okay, so you are saying yes, right. So let's go cross to. All right, well, let me get Sanjay Gupta in here. Allow me to complete, lady. All right, go ahead. 2 seconds. 2 seconds. You see, if you analyze the entire data, Shiv Sena has 20% vote across Maharashtra and Mumbai, of which 70% vote share has come to the Shinde Sena, the real Shiv Sena. What is the vote? 25% vote that UBT has secured is the remaining 25% and the minorities vote. So they are insecure. They have lost the base. They have lost the. All right, well, let's get Sanjay Gupta ji in here to counter that or respond to those charges. And Sanjay Gupta ji, आपका सबसे पहले एकनाथ शिंदे अपने बेटे के लिए कोई कैबिनेट बर्थ नहीं मांग रहे हैं. They're setting an example through that, but also सुबह से rumors चल रही हैं कि उद्धव ठाकरे जी भी is maybe in touch with the BJP. That feelers are going back and forth. yes, right. So Sanjay Gupta ji, आपका क्या response है इस पे? देखिए, उद्धव जी, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी से हमारे कोई रिश्ते नहीं रहे या उद्धव जी ने कभी ये इंडिकेशन नहीं दिया कि हम बीजेपी के साथ दोबारा नहीं जा सकते. ऐसा तो जब 2020 में चीफ मिनिस्टर बने थे और उसके बाद जब प्रधानमंत्री साहब से मिलने के लिए गए थे, तो उसके बाद भी उद्धव जी ने कहा था कि मोदी जी से हमारे पुराने संबंध हैं. उसके बाद बहुत से मुद्दे ऐसे रहे जिस पर उद्धव जी ने इस तरह के इंडिकेशन दिए और इस पर विचार भी किया गया कि बीजेपी के साथ फिर से जा सकते हैं, मगर वो बात सहमति नहीं बनी. जब लोकसभा के चुनाव थे तब भी इस तरह की बात उद्धव जी ने कही थी कि मोदी जी हमारे दुश्मन नहीं है. तो बीजेपी के साथ हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, ये विचार तो उद्धव जी की फाइनल करेंगे, क्योंकि उनका जो डिसीजन होगा उसी डिसीजन को हम सब मानेंगे. क्योंकि हमने एक बात ये कही थी कि ये बात तो हो सकता है, हमारे बहुत से पार्टी पॉलिटिकल लीडर इस तरह के हैं जिन्होंने इस बात को कहा. मैंने भी कहा कि शिंदे जी ने जो काम किया वो काम सही हो सकता है, मगर तरीका सही नहीं है. अगर उन्हें इस गठबंधन से, अजीत पवार जी के गठबंधन से, एनसीपी से इतना ही रोष था तो उनके सामने बैठ करके वो रिजाइन करते सारे के सारे और कहते कि अगर इस गठबंधन से बाहर नहीं आना तो हम जाते हैं आपके पास. तो उद्धव जी आते. उन्होंने तो वर्षा का बंगला भी छोड़ दिया था कि आप आइए वापिस, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ. तो जिस तरह से आज महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की जनता ने इस बात को नकार दिया कि जो काम शिंदे जी ने किया, जो काम बीजेपी ने किया ठाकरे परिवार के साथ, वो ठीक नहीं है. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों ने आपको बनाया, जिन लोगों ने आपको चलाया, आपको मिनिस्टर बनाया, विधायक बनाया, आप उनकी पार्टी को छीन करके ले जाएं. जी, चलिए इसीलिए शाइना एनसी और महेश के पास भी चलते हैं. शाइना, ये किस तरह के संपर्क बनाए जा रहे हैं? I mean, why is there an effort again? Because if anything, this mandate is an indication of how
people of Maharashtra, because I've traveled in that entire Nasik, Baramati belt, Gargi, and there was this sense that BJP was seen as this party which was being high-handed, that it had done that jod tor, it was out there to break other parties. You know, after that kind of mandate, if you are still in touch with, or overtures are being, if there are some overtures or perhaps feelers being sent, then shouldn't that be a rethink? Maria, please don't get into any kind of speculation. This is not the time or the place for it, because we are very, very clear. You said that we broke parties. Now, I'd like to firstly clarify on national television and on NDTV. Why did the Shinde Sena break? Because they were unhappy with Uddhav Thackeray. They were unhappy with that type of leadership. They were unhappy that they were devoid of Balasaheb Thackeray's ideology and chose to pull out because of this so-called Parivarvad. That was their premise, and they chose to leave and form a party which is the original Shiv Sena. Shaina, going with that logic, then from Baramati, it should not have been Supriya Sule winning. It should have been the other Pawar winning, Sunetra Pawar. She has lost. I'm coming to that too. In family-run parties like the NCP, it was Ajit Pawar who chose to leave with all the MLAs who supported him because they didn't want this kind of dynastic politics where you have father to daughter, etc. Based on competency, they too realized that they are leaders or regional satraps going to elections in the Vidhan Sabha in the next few months, at which time, if they don't talk about development and they don't talk about the work done by Prime Minister Modi, there's no chance they were going to re-win. So keeping that in mind, everyone has admired Prime Minister Modi. Let's not forget, this is the same Uddhav Thackeray that used Modi ji's photographs everywhere in 2019 to win elections. After fighting and winning 18 seats, they're down to 9 today. After fighting many more seats in terms of the number and the vote share and the strike rate, theirs has probably been the Sanjay ji, worst. just a moment. I'm not getting into any speculation of who is with who. I think we got the arithmetic wrong. Devendra Fadnavis too, as the Deputy Chief Minister, had the courage of conviction to say, we did this in the best interest of all for development Not of just Maharashtra. arithmetic, I think you also got the chemistry wrong in Maharashtra and all the calculations. Clearly, yes. Let's bring in Mahesh Tapase here, and your reaction to what Shaina NC said, also comments on the churn that is being talked about, feelers being sent back and forth, also lots of reports that feelers are being sent from MLAs from Ajit Pawar's side. Well, I'm happy that Shaina ji knows Ajit Dada so very well that she shares his views on domestic politics. But does Shaina ji know that Parth Pawar is the son of Ajit Pawar, who lost Lok Sabha from Mawad? Mrs. Sumitra Pawar, wife of Ajit Pawar, lost from Baramati. Archana Patil, niece of Ajit Pawar, lost from Dharashiv constituency. So what is the answer? If the dynastic politics was the reason for Ajit Pawar's revolt, then what is this? Giving tickets to your own people. So let's not get into that, because we very well know that it is BJP who broke all these parties, and Mr. Devendra Fadnavis, who is the Deputy Chief Minister and a tall leader of the Bharatiya Janata Party, we respect him as a tall leader. He made a public proclamation that I am the one who broke the party. Maine badla liya. And why did they take Ajit Pawar if they were so concerned with corruption? It is the Prime Minister who said naturally corrupt party. 2 days ago, he said, we gave a big statement on irrigation scam in Bhopal. 2 days later, they rope in Ajit Pawar with 30-40 MLAs. So BJP just wanted to upset the MBA government. First, they tried with the Uddhav Thackeray's party. They got in Mr. Eknath Shinde. Still, they thought that Mr. Sharad Pawar... Right, Mr. Tapase, all this has been rehashed several times. Right now, we want to know what is happening next. This churning, this, MLAs being in touch. We heard earlier Jayant Patil saying that they'll take everyone case by case. Lot of MLAs have called and wished all our newly elected CUC are strike rate. I mean, from 10 seats that we contested, we got 8. 9 seats we lost very fraction of margin. And most of the MLAs, they have called, they have spoken to our winning candidates. I do not know what is the discovery. It's just a courtesy call that they must have got. Nothing much to read.
But yes, some of them express their desire to come back. We made a mistake, we regret our. So it's So just a this very is being discussed. So formal. you're saying it This that is they very have made informal. mistakes and they are saying that they want to come back. That should be a is matter of very huge concern informal. for you, Shaina. No, I'm not at all amused by this kind of conversation to say this person called and this person said we want to come back. All of this is only hearsay. Please understand, Maria and Gargi. We are not into drama politics. We are into development politics, whether it's Devendra Fadnavis, Eknath Shindeji or Ajit Pawar. Utmost priority is to put Maharashtra on track in every sense. Take a case study of Mumbai, whether it's the metros, whether it's the coastal road, the Trans-Harbour Link, the speed at which this triple engine government is working is the agenda. We know we have a Herculean task ahead in the next coming months because we go to elections in October, You know, Mr. at which time we are And not Mr. going to get Devendra into Fadnavis split has, zone offered to or resign. He's in drama Delhi. He's or- going to be meeting. The Congress described this as a drama. Your response to that? The drama is clearly Nana Patole. Look at his statements through the elections. Maybe we've all forgotten all the comments he's made, and every night when you all called us for reactions on Nana Patole's comments. I mean, it's all very well when you do well, but as I said, you can't have 100% strike rate every single election. So we did so fantastically well in 2014, 2019. Yes, we would have wanted to do much better in 2024. The Okay, Sanjay Gupta, arithmetic 30 will be seconds and then I'll reviewed give the last word to Susi introspection Ben. Please too. go ahead. देखिए, गुप्ता जी। साइना एनसी जी ने कहा कि शिंदे जी नेतृत्व से परेशान थे इसलिए चले गए। ऐसा नहीं था, वो सीबीआई और ईडी से परेशान थे इसलिए चले गए थे। और महाराष्ट्र के अंदर बाला साहेब का नाम लिया जाता है, हमें किसी और पार्टी के नेता के नाम की जरूरत नहीं है, शिंदे गुट हो, बीजेपी हो या हमारा गुट हो। तो इसलिए साइना एनसी जो कह रहे हैं कि इनके नाम की फोटो लगा करके तब महाराष्ट्र में वोट मांगे जाते हैं, ऐसा नहीं है। बाला साहब के नाम पर इलेक्शन लड़ा जाता है और बाला साहब ने हमेशा आप तो मुद्दों भूल के गए आधार पर बाला साहेब सिद्धांत- ठाकरे की आइडियोलॉजी। आप वो आइडियोलॉजी भूल आइडियोलॉजी गए, हिंदुत्व को वहीं ही पे भूल है गए। जहाँ बाला पे साहेब ठाकरे क्या बोलते किसी के जो साथ आप जाए दोस्ती कर लेने कांग्रेस से के अपनी आइडियोलॉजी साथ, नहीं इसका जाती। जवाब दीजिए। इट इज ओनली पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। विचारधारा को तो आपने कब से छोड़ किसी के दिया साथ था। ऐसे तो आपने बहुत से लोगों के आस साथ हाथ मिलाया जो हिंदुत्व को नहीं मानते, हमारी तो क्या आपका हिंदुत्व विचारधारा चला गया? हमेशा एक मेरे एक ही हिंदू रहा बंधु है। आणि भगिनींनो देश काय शिकला? सर्वप्रथम, पार्टी हिंदुत्व नेक्स्ट, विरोधी इंडिविजुअल पार्टी लास्ट। नीतीश कुमार आप जी तो की है सत्ता के मोह और माया बहुत से के लोग हैं लिए क्या हिंदुत्व किए विरोधी, हम जानते टीडीपी के हैं। साथ भी गठबंधन रहा आपका। तो इसलिए आप बार सर, बार ब्लेम मत लाया कीजिए। सत्ता के चंद्रकांत मोह पाटिल जी माया से कुछ के सीखिए लिए जिन्होंने ये कहा था कि आपके उद्धव जी गट से ने क्या किया हम और सब बाला साहब जानते से हैं। हमारे बहुत विचारधारा रिलेशन है, को हमने वर्षों छोड़िए। वर्ष काम किया है। All right, now we're हम going ये into, चाहते हैं- discussions about ideology, etc. Finally, Susi Ben Shah, your comments on, going forward in Maharashtra, it's possibly going to see a lot Let me- more changes. Gargi, let me accept the people's verdict with all the humility, and I congratulate all winners in Maharashtra and across India. Now, why the concern? My friend, why Gupta ji has a concern of my friend in UBT has a concern because they're losing their vote share. They've stopped calling themselves. If you see Uddhav Thackere's opening statement, he no more says, "Mere Hindu bhai aur behno." He is not been able to digest this change. And after the strike rate, we have a 47% strike rate. We have a 47% of the vote. And therefore, he's realized, bhaiya, accept minorities and a little bit vote of the little bit we have today. And given the nature of votes your strike Marathi rate, do you and think Hindus. you So should have therefore- actually ensured that the Shiv Sena of Eknath Shinde should have contested on more number of seats? You should have Yes, got a of bigger course. share in this power pile? The reason The for sharing, this the seat also- sharing? No, I'll tell you, yes, you are absolutely right. There was rumor mongering, spreading false rumors of changing the constitution because we are a strong UT. There was a delay in declaring seats, which cost us dearly. We did lose in 3 to 4 seats because there was a delay in declaring seats. But it cannot be forgotten that today, Eknath Rao Shindeji, the Chief Minister of Maharashtra, who had an uprising, I would not say it was a revolt, it was an uprising to stand with the ideology of All right, All right. A final word, Mahesh Tapase. I just want to get you in here. Nana Patole earlier, spoke about wanting the assembly elections to take place sooner. Is this something the MV is going to work towards? Absolutely not. Yeah, We are let me going tell to you that serve our Maharashtra will mandate. see the similar We are going to result serve our in mandate Maharashtra Vidhan Sabha and come elections up also. in The the same- coming the 3 same- months
You will see a united, a stronger Mahayuti than it ever that was. was a question that Gagi asked to Mr. Mahesh. Yes, please go ahead. Yeah, I just Sorry, want to chip in over here that Maharashtra will see a similar result in the Maharashtra Vidhan Sabha elections. We will come back to power with a thumping majority. It's the Congress party, it's the NCP led by Sharad Pawar and the Shiv Sena led by Balasaheb Thackeray. All Who right. will be the free? It will be All right, Mahesh, post-election thank you so decision. much for joining us, Shaina NC, Susi Ben Right, Shah, well, and also Sanjay Gupta. Dunya Thank you all for kaayam hai, but joining it's us, not good. and clearly, a lot of churn there, and it's a story we're going to keep discussing. I think, Maria, for a few days to come. With that, time for us to take a short break.